We are live right now. So we will review the BoosterX paper. First, we'll do it for EC and then we'll do it for W. Okay. So we will just wait for 2 to 3 minutes and we'll let others join, and directly first Himanshu sir will display the ranks and he will let you know according to your marks what can you expect in the actual gate examination. So let's wait for 2 to 3 minutes, and till that point you guys can let us know like how was the paper. So we have made this poll live, so you can actually uh, choose whatever option you feel like. Was it hard? What is it? Was it easy? Was it difficult? Okay. So paper is good. आएंगे आएंगे भाई आएंगे, सब्र रखो, आएंगे. Student, it happens if you don't maintain the consistency and maybe you're not revising enough. So you might need to revise. So we will take your queries. First, we will discuss about the review and then we'll take your queries. So let the people join. Like we will wait Hmm. for 1 or 2 minutes only. Let the people join, and then we will get started. Okay. So Telegram पे share करता हूँ. Telegram पे share करूँगा. Yeah. So which subject did you guys find to be the most tough, like toughest subject? Which subject was the toughest one? Like setting up this camera is next to impossible task. Yeah. Okay. So which subject did you find to be on the tougher side? Communication, signal. Communication. Yeah. One question of communication was lengthy. I know that. Communication. One question of communication was lengthy. Signals communication. Okay. That's the review. Signals and communication was on the tougher side. Okay. I think this time control will be very easy for you guys. Too many MSQ. Yeah, look, Karthik, too many MSQs are expected in the gate examination. Too many MSQs are expected. Yeah, in gate electrical signal was on the tougher side. Yeah, I know that. क्योंकि मैंने सारे मैं अलग सारे चूज कर लिए मतलब. But have you guys watched the solution video? Please watch the solution video. People were saying that it was lengthy. I know that this review would come that it is lengthy, but actually it was not lengthy. Okay, I have made sure that questions are tricky but not lengthy. No. If it clicks to you, then it would be fine. No, if Otherwise, someone it is would. able to score 70 plus, then you certainly say that it is not Hindi, right? So, बाकी तो ज़्यादा मैं comment नहीं करना चाहता. Yeah, gate paper should be around this level only. This This is level what हाँ I ऐसा ही feel. होगा. Similar This ऐसा is ही what कुछ I होगा. feel. But who can comment? हाँ मतलब it can be difficult as well, कुछ भी हो सकता है. Yeah, you guys need to watch the solution video. After that, you guys will be a much better person. That I can tell you. 101% I can tell you. Okay. So let's get started. I will share the slide. First we will get started with the review of EC question paper, and then we will talk about electrical. Okay. So let me share the screen. Yeah. So Anish, I hope it is visible. हाँ it is visible. Yeah. So what do you guys think? What was the difficulty level? Like easy to moderate to tough, whatever it was, you guys will let me know. I'm just checking your comments here. Control very lengthy. अच्छा ठीक है. Easy to moderate to tough. Moderate. Yeah. I have set it to be on the moderate side, but moderate and tricky, I would say better हाँ would be moderate and tricky, modern I would ठीक है. say. Okay, I वो tried to make it as tricky as I could. Okay, all the questions I tried to confuse you somewhere. So yeah, this is what we have tried. So let's get started. Let's get started with the review that what all marks the guys are scoring. So rank 1 is scoring 70.67. Rank 2, you can read the marks. I don't need to read the marks. Okay, so total attempts as of now is 432. The test is still active. Okay, it is still active. Along with that, we have made Killer X active as well. Killer X is also active, which was conducted
2 Sundays back or 1 Sunday back, like basically last to last week it was conducted. So this is also active as of now. This is also, this particular BoosterX is also active as of now. Now our next test is replica X. So when it should be conducted? So for that, what you need to do is that you need to go to our community post. Okay, in our community post we have made a particular poll. There you will go and you will put your vote there that when it should be conducted, because on 1st of Feb you are saying that sir other examination are also there, one particular coaching institute is also organizing some tests, so we'll write down that particular test. So you can write down that particular test, but you guys will let us know that when you will be active for writing down our test. So in community post you can comment, after the session you can comment. Okay, yeah, so let's talk about the scenarios that what you can expect from this particular paper. So if you are getting 66 and above, I can expect that you can get under 10 rank. 58 and above, you can get under 100 rank. You can read it. Okay. And if you are getting this particular rank, then your attempt will be saved. Okay, it will be saved. But if you are getting below 30, below 35, then also you don't need to worry, because out of 432 students, 328 are scoring below 35. Okay, 328 out of 432. That's a huge number, because all these guys are a serious aspirant. Out of these 430, at least 400 students are the serious aspirant. Then only they are writing down the test series, and that too of PrepFusion, because PrepFusion is not that famous institute, no. So if you are writing down the test series here, that means you are more serious aspirant. So out of those 400 serious aspirants, hardly 100 people are scoring above 35. It doesn't mean that 300 students will not get anything. Out of these 300 students, a lot of people will do very good in the gate examination, and if not in gate examination, then in some other examination. The life is pretty big, right? After the gate examination there will be other opportunities as well. There would be PSU examination, there will be triple IT Hyderabad examination, BITS HD examination would be there, or different colleges examination would be there. You can get into NITs, there would be masters interview, there would be MS interview. A lot of opportunities would be there. A lot of guys are there. I know some of the guys personally as well who are scoring below 35 marks, but they are very talented. They will do something good out of it. So you should not be thinking that sir, I'm not getting 35 marks. Is it enough? Like, is it gone? Now my attempt is gone. Absolutely not. Out of these 328 students only, a lot of guys will do better. Okay, this is our first year only. First year we are conducting all India mock test. So like, we cannot tell that out of these 328 how many of them are doing good. But next year I will come and I will pick a lot of students out of these 328 students only, and they would be giving the interview here. Okay, so it's just that on a particular day, just looking at a particular examination, you cannot decide what will happen. This is just my assumption that yeah, those who are scoring this much marks, then they can be happy that yes, we are doing pretty good. But those who are not doing good, or those who are not scoring pretty well in this particular question paper, it doesn't mean that you are not doing good. You can surely do well. We are not going to set up the final question paper. Neither Anish sir is going to set up the final question paper, neither nor am I going to set the final question paper. IITs are going to set up the question paper. How they would set up, no one knows. Who knows? They are setting up the questions from those particular topics where you are more comfortable. I have set up signals and communication on the tougher side. Who knows? Signal and communication is coming on the easier side. You will be able to score well in those particular subjects. Anything can happen in the final examination. It's just that you have written the examination, you have given your level best. Now what you need to do is that you need to go to the solution video and watch the solution video completely. Try learning multiple concepts from there and make your concepts better. This is how you need to proceed in your preparation now. Is that clear to everyone? Okay, so I hope it is clear to everyone, and you guys will not be demotivated. Like, a level of examination you have written, a good level of examination you have written. Killer X was on the more tougher level, I know that, but this was like nearly to the gate examination level. So you guys should be happy that yeah, now we know what we need to do. We have 20 days left. 20 days are left. Pick those subjects where you are lagging, and pick those subjects where you are strong as well. Make strong one more stronger, and make the weak one at least decent. Weak should be at least decent, that at least you feel that yes sir, if easy question is coming, I will be able to solve it. If that particular thing you are able to do in 20 days, your job would be done. And I will make a separate video as well that what you can do in these 20 days. Is that clear to everyone? So I guess yes, I can end my discussion here. You can read it out, and yeah, anything else? Yeah, negative marking, it might happen that for some questions I left it. Okay. Yeah, so you guys can write up your query. No, first we will see for electrical, then you guys can write up your queries. Yeah, I will share my screen.
So this is the review for BoosterX for electrical. So you can just see the ranks of currently whoever have attempted. Currently there are almost 100 students who has attempted the paper, and these are the marks versus rank. And according to my analysis, because the number of aspirants are lesser, right, in our BoosterX, so I will not be able to certainly say I will not be able to certainly exactly say like if you are scoring this much amount you will get this much rank. But according to my analysis, if you score above 65 plus, then certainly you have a good chance to get under 10 rank. If you are scoring around 55 plus marks, then certainly you have a good chance to get under 100 rank. And as Himanshu sir said, that many students, like in this exam as well, BoosterX, only 25 to 20 students were able to score above 35, right? So even if you are between the range of 30 or 25 to 35, then certainly you can watch few videos that we will say later on, and you can improve on those, as Himanshu sir mentioned. uh, yeah, that this is the distribution of marks versus rank here for BoosterX double. Now I think we can take your guys' query. So you guys can start writing down your queries now. We will take up the query from Vinay's query. Vinay is saying, like, from here onwards, we are picking up the query, so you can write it down again. Okay. Vinay is saying that, sir, Ace Academy 42 plus marks, Concept X 70 percentile, Career X 30 marks, Booster X 42 marks. What could be your mindset from now? Your mindset should be just improve your weak subjects, and whatever the subjects are strong, just make them stronger. That's it. This should be your mindset. Nothing else. You are doing good. You can do pretty well in your final examination as well. So just be confident. In education was good, but the question framing was wrong. 240 is also a valid answer. देखता हूँ यार क्या था एप्टीट्यूड में. अरे वो सर्कल वाला बोल रहे, समझ गए. सर्कल नहीं, वो नंबर वाला, नंबर सीरीज वाला जो था. तो उसमें 240 ऑप्शन में था क्या? देखना पड़ेगा. 240 भी था ऑप्शन में. अच्छा, कैसे कैसे हो सकता है? 240 is also valid answer because all the corner elements divide the center element and among them 240 satisfies this. All the corner element divides the. तो वो तो फिर 195 को भी करते हैं ना? नहीं, 195 को नहीं करते सारे. ठीक है यार, कोई बात नहीं, अब छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं. अब क्या कह सकते हैं. ठीक है ना, अब यार छोड़ दो इसको, फिर और क्या कहें. केलर एक्स में 35 मार्क्स आया था सर, सिले मिस्टेक हो गई थी, हो गया तो 43.6 आया तो 500 रैंक से 1400 रैंक आ गया, क्या करूं. 500 से 1400 रैंक आ गया. अरे नहीं यार, इन सब से तुम ये मत सोचो कि इसमें क्या रैंक आएगा. ये मेरा एक अजम्पशन है. तुम्हारा किलर एक्स ये assumption है. पेपर कैसा आएगा उस सब पे डिपेंड करता है ना. सब कुछ भी हो सकता है ये सब, कि इतना रैंक आ सकता है. मतलब ये केवल कॉन्फिडेंस देने के लिए है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके लिए. ऐसा मत बाकी सोचो तो कि ये सर यही assumption आएगा. ही है. मतलब हाँ, देखिए, हम ये एक यहाँ पे तो अजम्पशन है एस्पिरेंट बस. इतना कम कम दे रहे हैं ना. यू नेवर नो, राइट, कि एक्चुअल एग्जाम में कितने कैसा लोग देंगे. सर नेटवर्क का डायोड वाला अच्छा था, बस ठीक ही आएगा क्या एग्जाम में. अब मेरे को क्या पता यार आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में. वो मेरे को बैठे बैठे क्लिक किया था वो डायोड वाला, मैंने बना दिया सवाल. वो कहीं से वो उठाया नहीं था, मेरे को कैपेसिटर क्लिक वाला, किया था वो. वो कैपेसिटर वाला हाँ जो होता है. हाँ हाँ. पता है मैंने गलती कर दी वो. मैंने गलती किया. क्या था, गलत किया था क्या? क्या किया, पाई 2 पे लिख दिया क्या, या 1 सेकंड पे किया क्या? मतलब वो सभी ने गलती करनी थी, मेरे को पता था. पाई 2 ही सोचेंगे सभी पीक वैल्यू, बट सोचो ना कि वहां से भी ग्राफ डाउन जा रहा है. मैंने मल्टीप्लाई करके वो पे देखा नहीं बेसिकली. ठीक है. अनीश सर ने भी पेपर दिया था ये वाला वैसे. ठीक है. लेकिन ऐसे नहीं दिया था, अलग से दिया था. ठीक है, अलग से दिया था, तुम लोगों के बीच में नहीं दिया था तो. X में 35 मार्क्स आए थे. देखो अंकित कुमार, वी विल मेक ए वीडियो फॉर लास्ट 20 डेज, तो उसका बनाएंगे. इसके बाद ही बनाएंगे एक वीडियो. ठीक है. हाँ अक्षित, देखो यार, ये एग्जाम के दौरान कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार कि आगे क्या होगा सर. ठीक है, ये बहुत बार दिमाग में आ जाता है ये सर एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा, तो मैं फिर मैसअप हो जाती है चीजें. तो अब जब दे रहे हो, जैसा जा रहा है पेपर, करते रहो ना. फिर आपने ईएमएफटी ईडीसी को लेफ्ट आउट कर दिया और सभी दिक्कत हो गया पूरे पेपर में.
है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए, एग्जाम के दौरान आप करते जाओ, फिर फाइनल एग्जाम में जो स्कोर आएगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ये चीज सीखने को मिली है कि एग्जाम में कभी भी कुछ खराब नहीं होता। 48 मार्क्स कितने बढ़िया है इस पेपर में, अगर आप ईडीसी एमएफटी बढ़िया से करते तो हो सकता है आप कहाँ 55-60 पे पहुंच जाते, जो कि और बेटर स्कोर होता। तो इससे आपको ये सीख ही मिलती है कि हमें एग्जाम के दौरान कुछ अजम्पशन नहीं बनाने चाहिए कि अच्छा जा रहा है खराब जा रहा है, ठीक है। एग्जाम आपका अच्छा ही जा रहा है, यही मान के चलो, ठीक है। देखो आयन, या आयन जैसे ऐसे श्रूजन, राइट, श्रूजन आयन ऐसे ही डमी अटेम्प्ट जैसा दो, ठीक है। मेन अटेम्प्ट इसी है, तो रिवीजन पे फोकस दो। आयन बस देना है उसको, एक मॉक की तरफ से सोचो, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ देखो, यहाँ का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ठीक है, दैट्स फाइन। तो आप अभी देखो, आप व्हाट आर योर वीक एरियाज, वहाँ पे इम्प्रूव करो। वहाँ के थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पेपर देखा हूँ उस इंस्टीट्यूट के, ई बी जैद खान, मेरे को उतने मतलब रिलेवेंट नहीं लगते कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, वीडियो सोल्यूशन है, अच्छे से देखो, उसको इम्प्रूव करो। नहीं, सिद्धांत ऐसा कुछ नहीं है कि और कहीं 40-45 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव ले लो ना, आप यहाँ पे 18 आए इसको नेगेटिवली मत लो, ठीक है ना। कहीं और 40-45 आ रहे हैं तो बढ़िया है, ठीक है, उसको रखो दिमाग में, ठीक है। और बस ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट नहीं होना है, अब और परफॉर्मेंस बढ़िया करना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जब टेस्ट होगा नेक्स्ट वाला उसमें और बेटर करने का ट्राई करना। 30 मार्क्स आया है, मैं कम्युनिकेशन और आज का रखा है, आज का देख के डर लग रहा है सर बहुत। यार देखो, वही सबको एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, डरने की बात नहीं है, डरना नहीं है, इससे सीख ही लेनी है कुछ, ठीक है। डरना नहीं है कि पेपर में ये स्कोर कम आ गया, ज्यादा आ गया। और भी टेस्ट सीरीज है ना, और भी टेस्ट सीरीज लगा के देखो, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। अब छोड़ो, मैं प्लेटफॉर्म के नाम सीधे सीधे बोल देता हूँ। देखो, अन अकेडमी पे फ्री टेस्ट हो रहा होगा, वो फ्री टेस्ट लिखो। एस अकेडमी फ्री टेस्ट करवाएगी, वो फ्री टेस्ट लिखो। मेडिजी फ्री टेस्ट करवाएंगे, वो फ्री टेस्ट लिखो। और इसका कोई भी फ्री टेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ जो होता मेरे है? दिमाग में इसका नहीं आ नहीं रहा हो है। रहा। हाँ, इसका पीरियड होता है, इसका फ्री टेस्ट नहीं है। इसका फ्री टेस्ट नहीं है, नहीं, मतलब एक है कोई फर्स्ट वो फ्री भी है शायद, अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा। और कोई भी इंस्टीट्यूट हो आपके आसपास, कोई भी फ्री टेस्ट कहीं से कुछ करवा रहे हो तो वो लिखो ना, वो टेस्ट, ठीक है, सारे फ्री टेस्ट लिखो। अब देखो, क्वालिटी तो इससे बढ़िया नहीं होगी, मैं ये बता हाँ रहा हूँ हाँ, टेस्ट की, ठीक है। ये तो क्योंकि तो हमने भी देखा है, ये अब मैं खुद देखा हूँ अभी एरोगेंस मान दूसरे। लो आप इसको, या फिर कुछ भी मान लो, हाँ। या एफर्ट की मतलब अप्रिसिएशन मान नहीं, लो, ये तो वहाँ मैं पे, बता रहा हूँ क्वालिटी इससे बढ़िया नहीं होगी। वहाँ पे दिक्कत ये होती है, मैं बताता हूँ, मतलब सीरियस प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग ही पेपर सेट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई और पेपर सेट कर रहा है, पढ़ा रहे हैं सर लोग, और कोई और पेपर सेट कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो पेपर सही से बन नहीं पाता कभी कभी। एक दिक्कत ये हो जाती है बेसिकली। और उससे आपको फिर वैरायटी भी मिलेगी ना, अलग अलग टीचर अलग अलग हाँ सवाल सेट कर रहे हैं, वैरायटी मिलेगी। एग्जाम में तो फाइनल एग्जाम में ना मैं पेपर सेट कर रहा हूँ, ना कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट पेपर सेट कर रहा है। तो जब इस माइंड से जाते हो ना कि डिफरेंट वैरायटीज के सवाल हमने लगाए हैं, तो वो बेटर हो जाता है, फाइनल एग्जाम फिर बेहतर होता है, ठीक है। तो हमेशा टेस्ट लगानी चाहिए। जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय जो भी ऑनलाइन कोचिंग थी, मैंने एक भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ी थी कि इनको तो करना ही है टेस्ट सीरीज को। कई टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी और कई टेस्ट सीरीज बढ़िया भी थी, ठीक है। अब सिनेरियो डिफरेंट हो गए हैं, कई और कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़िया हो गए हैं, कोई टेस्ट सीरीज अच्छे लेवल पे नहीं बना रहा है, तो उसका अब मेरे को आइडिया नहीं है ज्यादा, क्योंकि मैं खुद टेस्ट सीरीज लिख नहीं रहा हूँ अभी। नहीं, मैं जिस समय बताऊंगा लिखूंगा तब मैं आपको, बताऊंगा। मैं बताऊँ एस, और आप एस और मीडीसी दे सकते हो, ये दोनों डबल के लिए रेलेवेंट है। अभी इसी का मेरे को पता नहीं है, लेकिन एस और मीडीसी दे सकते हो डबल के लिए। बाकी हमारा तो है ही। हाँ रेप्लिका व्योम, इसका हम डिसाइड करके बता देंगे यार। व्योम आपका इस टेस्ट में कितना है, बूस्टर एक्स में कितना है आपका, ये बताओ। देखो रेप्लिका एक्स भाई पता नहीं कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है, वो गेट लेवल है ना, तुमको पता होता है क्या गेट का हाँ, एग्जाम कैसा हो सकता है? तो ये पता नहीं, कुछ भी हो एकदम सकता है। पूरा ही गेट लेवल आएगा, एकदम ही गेट लेवल आएगा, ऐसा लगेगा कि कुछ भी हो थोड़ी सी गेट वाली फीलिंग भी आएगी, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट भी होगा। वो मैं एग्जाम होने के बाद बताऊंगा कि क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट है उसमें। एक कुछ सरप्राइज डालेंगे हम लोग, ठीक है, गेट वाली पूरी फीलिंग की तरह। वो कई लोगों को ट्रिगर करेगा, और कई लोग उससे खुश भी होंगे, ठीक है। अनिश, हम डिस्कस करेंगे क्या सरप्राइज डालना है। अच्छा, मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहता है, वही करना चाहता है जो मैं हाँ, सोच रहा हूँ। हाँ, ये तो तो हाँ। एक कुछ सरप्राइज एलिमेंट हम डाल रहे हैं, जैसा गेट में होता है, आपको लगेगा कि हाँ चलो ये इन्होंने गेट जैसे किया, क्योंकि हर बार जब भी गेट का एग्जाम आता है उसके बाद हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, आईआईटी को कुछ ना कुछ बोलते ही लेकिन हैं कि इन्होंने क्या मेरे पेपर बना दिया। डबल ई के क्लियरेंस में शायद मैंने वो एक बार कर दिया है, ठीक है, वो हिंट है, शायद मेरे डबल ई के क्लियरेंस में शायद कर दिया है वो, शायद इसमें नहीं, इसी में नहीं हुआ है, लेकिन डबल ई के शायद में हुआ है। अच्छा,
Sir, even in the strong subject, I'm not able to score 100%. It's almost as a weak subject. So on, like, first let me know, like, which subject do you find to be your strong subjects? Then I will be able to guide you better. Okay. 45 marks. It didn't solve the last 10 questions because of number of MSQs in last 10. I know 4 answers. I'm good. You are doing good. CSK1 Venkat, you are doing pretty good. Haven't studied EMFT and ADC. Can I do anything to gain more marks from EMFT? In EMFT, you can do the part which I explained last year. Like from the core capsule, you can do some part. Transmission line part you can do. Otherwise, like I'm not saying that you should do it, but if you feel like that's something in EMFT I want to do, then you can do that transmission line part which I explained last year. Like last year, I made 2 or 3 videos saying that this particular thing you can do to get some 2 or 3 marks. And last year, one question also came from that particular video. Like every year, questions are coming from transmission line, no? So that's why that becomes an important topic. So you can watch that particular part. Rest you can drop. व्योम देखो 39 मार्क्स सही है, आप एनालाइज करो, यू एनालाइज दिस पेपर, कहाँ पे कौन सा टॉपिक आपका वीक है, फिर उसको थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। बूस्टर में 39 यू आर इन अ गुड डायरेक्शन। यार संचित, क्वांटाइजर वाला क्वेश्चन बढ़िया नहीं था, वो केवल कैलकुलेशन वाला था। उसमें मैंने जानबूझ के डाला था ना कि जो मेरे साथ एग्जाम में हुआ है वो मैं सब लोगों के साथ करूंगा। Like सबको you guys सबको would be वो thinking that sir, quantizer question was very lengthy, sir. Why did you pick it? It was very lengthy question, right? Quantizer one. Look, but when I gave the examination in my attempt as well, there was a very lengthy question from quantizer. So I spent there 15 minutes and I got 0 marks in that. 15 minutes and 0 marks. So this was just a message that if the question is coming on quantizer, then drop it there. Even if you feel like that I can solve it, then also you should drop it, and then later on you should come to that particular question. So with every single thing I am giving a particular message as well. That's why I am saying that you should watch the solution video. Always you should watch the solution video. Okay. So you guys should watch the solution video. There everything, like from this particular question, what you can learn, what you can think of this kind of question in the examination hall, everything I'm telling. Okay, so a way of attempting a particular question paper, that also has been explained in the solution videos. So you guys should be watching the solution videos. Okay. Yeah, Amul gate, yes, efficiency does go away while once you start actually solving the questions with the timers, right? That happens with everyone. This will go away with practice, and make sure to actually sit properly in your whatever desk, right? And properly solve with a rough copy and all these things. Okay, so your efficiency will be proper. Make sure to sit in a chair and table and properly solve the questions, not just solve it roughly. Don't do that. Efficiency. Calculation problem, yeah, hogi. If you are facing problems in calculations, maybe you can solve the questions bit slowly. Okay, you can solve the questions bit slowly and properly write the values, right? Agar ho rahi hai to dheere dheere, once you get the hang of it, then it will be good. Also, please watch the video how to use the gate calculator. Himanshu sir has made that video, so that will also make your calculation bit strong. Okay. And let me tell you one more thing, what happens with a lot of students. Let's just say there is a particular question, you are solving that particular question, and the calculation is going a bit rough. Okay, the calculation is going a bit rough. So at that particular time, people feels like that I should drop this particular question because calculation is going rough. So there you need to hold on. Okay, you need to tell yourself that yes, I can do this calculation. Let's get to the final answer. A question is there which is having complex calculation and it is numerical answer type, then a lot of people would be just near to the final answer, but they would be dropping it. It happens with a lot of students. I know it happens with a lot of students. Just you are near to the final answer, but you have dropped it in between. Just because you felt like that, I will get the wrong answer. So that should not happen. Give your full attempt in that particular question. Whatever the answer you are getting, put that answer in your NAT box, and then move to the next one. Okay, you need to have confidence on yourself. Okay. One more thing, I'm scoring 50-57 all full and tested. Now I have written as what's your suggestion? Yeah, SVS, you are doing good. That's nothing suggestion from my side. Just keep on improving. Just keep on studying the way you are currently studying. What was your marks in this particular test? Vinay, your query has been answered. This was the first query that I answered. Okay, your query has been answered. Please don't repeat it. It has been already answered. Go back to the video, and you can see the answer of your query. करेक्ट मार्क्स हो जाते हैं, बट सर उससे एक ऑप्शन ज्यादा मार्क हो जाता है. आई नो 2 करेक्ट ऑप्शंस आर देयर, बट
देन थर्ड ऑप्शन फील्स करेक्ट, 2 का 0 मार्क्स हो जाता है। इतना सोचोगे यार कि 2 सही है कि 3 सही है, जो सही है वो उस पे मार्क करना यार, इतना मत सोचना कि ये भी सही हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा, तो नहीं, वो वाला एग्जामिनर दिमाग नहीं तो लगा। सोच के किया होगा वो कि नहीं 3 सही होगा, 3 नहीं सही हो सकता ऐसा, इतना इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है? इतना दिमाग जो लग हाँ, रहा है तुमको दिमाग सही अपन लग को रहा है। केवल उस पे लगाना है कि हमें बस सवाल नहीं, सही करना कभी-कभी है और होता है, कोई दिमाग नहीं लगाना। प्रोबेबिलिटी होता है कि न अगर 2 ऑप्शन होते हैं और दोनों एकदम अपोजिट बोल रहे हैं कि R के इस वैल्यू के R इक्वल्स टू 10 R इक्वल्स टू 20 तब तो आसान है, राइट? अब सेम ही है, अगर डिफरेंट चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, तो उतना सोचना नहीं है, फिर सॉल्व करना होगा। कुछ-कुछ लोगों को लेंथी लग सकता है क्योंकि हाँ, एमएसक्यू ज़्यादा थे तो इसलिए पेपर लेंथी थोड़ा-सा लग सकता है, लेकिन वो तो होंगे। पानी नहीं है यार। तो I have a doubt 176 regarding the final people exam have if voted, given. 180 I have doubt regarding the final exam if given limited to 2 decimal places. If we give more than 2, yeah, if you give more than 2 decimal places, then there is no issue. No issue. Yeah, Mr. Perfect means you can study now. Yeah. लाइक कर दो यार वीडियो 26 को, आ रहा है, आप पहले इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, इंप्रूव कर सकते हो। 26 मार्क्स भी इतने खराब नहीं है, आप इंप्रूव कर सकते हो श्योरली। हाँ, सुमुख आई सॉ योर देखो सुमुख दिस विल गो अवे विद प्रैक्टिस एंड रिवीजन, so you give more mocks, right? Now you can give the replica X as well, and yeah, you just give more mocks, this will go away, that's the only solution. देखो संचित, अरे भाई इपिक क्रिएशन भाई, कितनी बार आप पूछोगे हाउ मच मार्क्स डिड यू यूज टू गेट इन टेस्ट सीरीज? मेरे मार्क्स कैसे मैटर करते हैं? अभी मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, पहले मैं स्टूडेंट था, ठीक है, तो मेरे मार्क्स कैसे मैटर करते हैं? नहीं करते ना। तो अगर मैंने कोई क्वेरी अगर इग्नोर कर दी है तो मैं उसका आंसर नहीं करना चाहता, ठीक है, तो उसको बार बार मत लिखो, ठीक है ना। हाँ, ऐसा हो सके तो ये एमएसक्यू में एक ही करेक्ट हो, हाँ बहुत बार होता है, ठीक है, मेरे खुद के अटेम्प्ट में 3 से 4 बार ऐसा हुआ था, 3 सवालों में एक ही करेक्ट था, तो एमएसक्यू में 1 करेक्ट हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखना। एमएसक्यू मीन्स मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स you are expected that multiple option would be correct, but only one option can also be correct. So just keep that in mind. strong or how a signal system, so I think Rohan should be, I think you should focus on the weak ones if you feel like you can score from that part. Look, Sampath, you have scored very well in Ace Live. 57 marks are pretty good. Even in BoosterX, you are getting 41. That's also pretty good. Just keep on revising whatever that you have studied. That's it. Keep on revising and try writing more tests. You can attempt 3 to 4 more mock tests as well. Easily 3 to 4 more mock tests you can attempt. You are doing good. Don't worry about it. Okay. In 15 Killer X, minutes. the marks was on a pretty low, like it was a bit low, but you have improved well in Ace Live and Booster X as well. So you are improving. So keep on improving in the same manner. Yeah, Dinant, now you should revise. No, avoid studying new subject. You should revise right now. Paper to manage time. That will come with Sohan, practice. like Bata, bata. Sohan, like you feel like that network digital signals are your strong topic. So as of now, if you feel that they are strong, then drop them, but focus more on the weak ones. Okay, if you feel that this particular subject is weak, then you can focus more on that, and you can improve that particular subject. देखो संचित, ऐसे तो Next week, वो नहीं होता, वो प्रैक्टिस करके ही होगा, और क्या, कॉन्सेप्ट कम कम होता है तो फिर इम्प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो सृजन ऑलरेडी बता दिया ना, मतलब वी कैन नॉट कमेंट क्योंकि हम वी आर नॉट सेटिंग द पेपर, फाइनल पेपर, राइट? तो वी कैन नॉट कमेंट हियर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। नेक्स्ट टेस्ट ईदर विल बी ऑन द कमिंग सैटरडे और नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे, ठीक है? तो वी विल सी Saturday or Monday. सैटरडे और मंडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे और सैटरडे। हाँ देखो वेंकट वही है ना, एमएसक्यू का सीन ऐसा ही है कि वो डिफिकल्ट है बेसिकली, एक गलत गलत हो गया तो फिर गया, मतलब पूरा 2 मार्क्स ही गए।
SVS, did you write down today's test? Like you have written 20 marks, but did you write down today's test? And if you have written down, then what was your score? That I'm asking. Okay. Yeah, BoosterX, like you can see him, Pavan, Killer X only 23 marks, but BoosterX here he has improved 43.67. So that's a significant improvement. And hopefully he will get very good in Replica X as well. So yeah, like what to do, whatever that you have done between Killer X and Booster X, the same thing you need to do. That's it. Okay. Don't listen to anyone else. Just keep on improving your subjects. It feels that you have completed the full subjects, all the subjects you have already completed. So just keep on improving your weak subjects. That's it. नहीं मित्र रद्दी, you check the question, right? All the data is present there. Question देखो, सारा data वहाँ पे है. It was present in the actual question. Video में नहीं, वहाँ पे बाद में ऐड किया, वहाँ पे question में it is already present. देखो सोहन शेप पे कंट्रोल का ऑलरेडी वो है, RPYQ है, राइट? तो वहां से क्वेश्चन देख लो, वहां पे ऑलरेडी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सब कुछ करवा दिया है, तो दैट शुड बी इनफ. EMFT के लिए कुछ वीडियोस आएंगे, तो वो अपलोड होंगे बाद में, ठीक है? संजीत देखो 51.68 था, अभी 52.67 आया है. हाँ, अच्छा, लास्ट ईयर 52.67 था, 2025 ना. हाँ, तो देखो ये वाला मतलब 25 से तो काफी टफ लेवल पे था. 25 से तो ये ज्यादा टफ लेवल पे था ये वाला पेपर, ठीक है? सो 25 से कंपेयर नहीं कर सकते इसको. 24 और 25 के बीच में था ये, तो ये बेटर ही है, लास्ट ईयर से बेटर है, ठीक है? हाँ विजय देखो क्यों नहीं आ रहे, लाइक इज इट ड्यू टू द कैलकुलेशन मिस्टेक और इज इट कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, राइट? So just see that if it is a calculation mistake, then you need to solve the question slowly. If it is conceptual, that means you have not learned the subjects properly, right? Yeah, you got 49. Yeah, so SVS you are doing good. Like already you have written 20 mocks. So I would say that as of now you focus, you take 6 to 7 days and revise whatever that you have studied. Okay, revise it completely. Weak topics, make it stronger, and then get back to the full length test again. Your marks are also pretty good, and the number of mocks that you have written, that is also pretty good. The only topic I feel nothing is working in random process. And should I try one day and try to cover it, or just leave it and go for it? If you have covered it already and if you want to make it stronger, then you can do it. But if you want to start from zero, then it is not possible, right? You cannot start from zero. If you feel like that's a random process, I don't even know, then you cannot start from zero. But if you have already covered it, then you can watch my videos, it will be stronger. But you cannot start from zero. हाँ यार, EMFT का प्रॉब्लम हो रहा है ना, सभी को हो रहा है EMFT का प्रॉब्लम. तो मैं कुछ सवालों की सीरीज लेके आऊंगा EMFT की, ठीक है ना? और पिछले ईयर्स का ट्रेंड देखें तो यार EMFT में बहुत ज्यादा सिलेक्टिव टॉपिक्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव आ रहे हैं. अब इस साल भी सिलेक्टिव आ जाएंगे ये मैं कह नहीं सकता, बट आप देखोगे तो जैसे मतलब ये होता ना कि सर इसी में से आना चाहिए, वहीं से आ रहा है. जैसे मान लो कि ट्रांसमिशन लाइन से एक्सपेक्ट करते हो आप, वहां से सवाल आना चाहिए, वहां से आ गया, ठीक है? अब फिर उसके बाद आप वेव गाइड में फॉर्मूला बेस्ड सवाल एक्सपेक्ट करते हो, वो आ गया, ठीक है? फिर एंटीना वगैरह में कहाँ से एक्सपेक्ट करते हो कि बेसिक से आए, मतलब हर्जियन डायपोल वगैरह वहां से ना आए, बेसिक से आए, तो वहां से सवाल आ गया. आप पोलराइजेशन पे सवाल एक्सपेक्ट करते हो, तो वहां से सवाल आ गया. तो EMFT में ये हो रहा है कि एकदम मतलब जहां से एक्सपेक्ट करते हैं वहीं से सवाल आ रहा है. तो अब देखते हैं, मैं उसकी कुछ सवालों की सीरीज लेके आ जाऊंगा, बट हु नोज आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ जाए तो मैंने दोनों टेस्ट सीरीज में EMFT में वही सवाल डाले हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, कि इतने मतलब नहीं है कि इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, तो सारे सवाल ही आउट ऑफ द बॉक्स डाल दिए थे मैंने EMFT के. तो अब देखते हैं क्या रहता है. रेप्लिका एक्स में मैं वही डालूंगा जो कि एक्सपेक्टेड है लोगों को, ठीक है? हाँ देखो Rahul, we cannot comment, right? It depends on the difficulty level of the paper. If the paper is really easy, then the marks will go higher, right? So you cannot comment. 36 marks in booster accuracy, 60%. How to improve the accuracy? Improving the accuracy, like solve the question with more patience and have good concentration. If you don't have good concentration, then this problem takes place. 60% accuracy is low. Try getting around 75% accuracy. So solve the questions with more patience.
12 marks in Killer X, 10 marks in Booster X, covered signals, control, network, digital maths, left probability, not done enough revision of network signal, digital. Will I be able to complete my revision or should I drop an insect to at least get into IIT? I am from schedule track. Okay. So, Tarun, you would require 25 marks, no? 25 marks you should target. So, whatever that you have covered, just revise it. That's it. Don't feel हाँ like, don't think of anything else. Whatever that you have covered, just revise it. Okay. And uh, signals you have done, signals, network, digital, mathematics, aptitude, these subjects you should revise. You need 25 to 30 marks. That would be enough for you. 14 Feb, I think 3 days before the exam, 4 days before the actual exam date, you can give. After that, don't give any marks. That is my recommendation. Short notes, Shivani, you can watch this Revision X, download the Revision X notes, right? From there, you can revise. You can do it from your Yeah, own Pranav. notes. Yeah, Pranav. Yeah, they are easier. They are easier. Okay, they are easier than the Booster X and Applic X. That's it. Those tests are easier than this. भाई डिजिटल कम्युनिकेशन पार्ट 2 यार ये सब नहीं आएगा. इतने तो फ्री ट्रायल वगैरह ओपन कर दिए यार. जो चीज ला रहा हूँ वो आप देखते नहीं हो. फ्री ट्रायल वगैरह ओपन कर दिए, वहां से कर लेते यार. हजार व्यूज आ गए हैं मतलब फ्री ट्रायल में कम्युनिकेशन पे. इसका मतलब लोगों ने यूज किया है फ्री ट्रायल का. तो आप उस समय करो ना, यूज करो ना उसका. Yeah, I guess we can end the session, Anish, right? We can end. चल ठीक है. Yeah. ठीक है. Thank you guys. Okay then. Yeah. Yeah. Thank you guys. Next we will